Assalamualaikum viewers, I hope all of you are fine. Welcome back to my channel Zani Study Instruments. Here all students who are doing master or BS in English can seek help. Our today's course is Grammar English 2 and I'm gonna tell you about the very important topic is time management. Before starting this video guys, please subscribe my channel and press the bell icon as well to get notification of my new videos. And video अच्छी लगे तो please press the like button and share my video with your friends. The viewers who have subscribed my channel are requested to watch the video till end so that you can understand the full topic. If you don't understand, please tell me in the comment box. If you need another topic, please tell me in the comment box. You will get the same topic in the next video. Zani Study Instruments, Literature in Pakistan. Now I'm gonna start the topic. Time management. Time management is the process of organizing and planning how to divide your time between specific activities. Time management एक ऐसा अमल है जिसमें हम अपनी ख़ास एक्टिविटीज़ को डिवाइड कर लेते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, प्लान करते हैं. एक ऐसा प्रोसेस जो प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग का एक ऐसा प्रोसेस है जो हाउ टू डिवाइड हमें बताता है कि किस तरह हम अपने टाइम को तकसीम करें, डिवाइड करें अपनी स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ के दरमियान. गुड टाइम मैनेजमेंट इनेबल्स यू टू वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर. अच्छे तरीके से टाइम मैनेजमेंट किया हुआ हो तो हमारा काम इजीली हो जाता है, आसानी के साथ, न कि मुश्किल से होगा. सो डैट यू गेट मोर डन इन लेस टाइम even when time is tight and pressure are high. तो यहाँ तक कि हमारा टाइम जब बहुत कम होता है हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर लेते हैं, और हमारे पास जब बहुत कम टाइम होता है, टाइम हमारा बहुत टाइट होता है, प्रेशर हम पे बहुत ज़्यादा होता है, उस वक़्त तो ख़ासतर टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज़रूरत होती है. एंड now important MCQs about time management topic. First, what's the one thing that doesn't belong on a to-do list? A detailed list of all tasks for a day. How many minutes does the average American spend commuting to work each day? 25 minutes. Do you ever say this, I will just watch a few minutes of TV to compress? Yes. At what hour does productivity peak for most people? 8 a.m. Time management gurus agree. Planning ahead is the key to a productive day. For every 10 minutes you spend on planning, you will save how much time of execution? 1 hour. Completing activities in parallel is called fast tracking. The amount of time an activity can be delayed before affecting deadline is slack. Adding resources to an activity to shorten the critical path called crashing. The tool most closely associated with activity bars across a horizontal time axis is Gantt charts. In the PNEZD point file format, the D represent description. गाइस, ये था हमारा आज का टॉपिक टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट MCQs, ज़ैनी स्टडी इंस्ट्रूमेंट्स लिटरेचर इन पाकिस्तान. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अल्लाह हाफिज़.